Hello everyone, I'm Cecil and this is the first of three stories we'll cover today. In the story one, हम break down करेंगे कि क्यों Indian Rupee slip हुआ to the fresh all-time low of 89.95 against the US dollar. In the story two, we'll look at Swiggy's massive 10,000 crore rupees fundraising plan that could open as early as next week. और story three में we'll explore कि Meesho के IPO that would be opening today is seeing a strong gray market premium of 36 to 38% and what are the reasons behind it. So let's dive in and know about each story in detail. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टोरी की वेयर देयर इज अ मेजर डेवलपमेंट इन द करेंसी मार्केट्स द इंडियन रूपी हैज स्लिप्ड टू एन ऑल टाइम लो ऑफ 89.85 पर यूएस डॉलर इस फॉल के पीछे क्या रीजंस हैं why is the rupee weak despite strong gdp growth and what's the outlook from here let's break it down clearly and simply so rupee fell हुआ है by 32 पैसे yesterday touching 89.85 per dollar its weakest level ever. This comes just a day after the currency closed at 89.73 already below the earlier record low of 89.49 which was set 2 weeks ago. अब इन चीजों को एक पर्सपेक्टिव में देखने के लिए अगर हम देखें तो नवंबर 3 से रूपी फॉल हो चुका है मोर देन रूपी 1 अगेंस्ट द डॉलर एंड इन 2025 रूपी हैज ऑलरेडी depreciated about 4 to 5% making it one of the worst performance in Asia this year. So clearly this is not just about a one day reaction, ये एक clear trend है. This weakness is happening despite strong economic numbers as well. India ने अभी हमने देखा था कि एक strong GDP growth दिया है for Q2 at around 8.2%, but still जो currency market है that is telling a totally different story. So let's look at the key reasons. तो सबसे पहला reason है that there is no progress on the US-India trade agreement. और ये सबसे बड़ा फैक्टर है राइट नाउ बिकॉज एक ट्रेड डील का एब्सेंस होना बिटवीन इंडिया एंड यूएस दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक क्लैरिटी बट नेगोशिएशंस और डीले की वजह से ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है. ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रोग्रेस व्हिच हिंट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कीप एक्सपोर्टर्स कॉशियस एंड इम्पैक्ट्स द डॉलर इनफ्लो एज वेल. Now, according to analysts, ये uncertainty is overshadowing even the positive economic data as well. Now, the second reason can be the weak dollar flows and heavy demand from the corporates. So, according to Reuters, corporate demand for dollar अभी बहुत ज़्यादा high है. Exporter supply inconsistent है और speculators are adding to the volatility. Now, if we put all these together, so more people want dollars and fewer are selling them. So, naturally, rupee weaken हो जाएगा. Third reason अगर हम देखें तो foreign investors are pulling out, which means that FIIs have been selling consistently. 1 दिसंबर को FIIs ने नियरली सोल्ड किया 1140 करोड़. सिर्फ नवंबर में अगर हम देखें तो ऑलरेडी 15,659 करोड़ ऑफ इंडियन इक्विटीज सेल हो चुकी हैं फ्रॉम FIIs. एक वीकनिंग रूपी मेक्स रिटर्न फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स अनअट्रैक्टिव सो दे सेल मोर व्हाइल वीकन द रूपी इवन फर्दर. और ये एक लूप क्रिएट कर देता है. Now we look at the fourth reason, that is global risk of sentiment. So Rahul Kaltari from Mehta Equities explains this well. He says that due to the slow export growth, there is a lot of uncertainty over the trade deal as well. There are a lot of geopolitical tensions. Cryptocurrencies में भी हमने देखा कि recent में crash था and strong safe haven flows into the US dollar. ये सब कुछ push कर रहे हैं investors को towards the dollar and away from the emerging currencies like the rupee. Now what to expect further? मार्केट्स आगे कैसे रिएक्ट करेंगे एंड क्या मेन चीजें होंगी जो हमें देखनी चाहिए. सो मेन चीजें जो फर्स्ट है उसमें आरबीआई एमपीसी आउटकम जो दिसंबर 3 से 5 के बीच में आएगा और इसमें कोई भी कमेंट्री या करेंसी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. सेकंड इज प्रोग्रेस ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील. एक स्मॉल पॉजिटिव सिग्नल भी रुपी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है. एंड देन द एफआईआई फ्लो ट्रेंड्स बिकॉज आउटफ्लोज अब रिवर्स होने चाहिए वरना दिस कुड लीड टू अ मच मोर नेगेटिव सिग्नल. Then dollar index movement, because as global fear rises, dollar will strengthen further. And if we talk about the corporate demand for dollars, so higher demand is weakening the INR. So we have to look at this number also. And now let's move to our second story for today, where we'll see एक major fundraise जो plan हो रहा है from Swiggy, जहाँ पे company prepare कर रही है around 10,000 crores का share sale as early as next week. So let's break it down. What's happening, why it matters, and investors के लिए इस चीज का क्या मतलब हो सकता है.
So according to Bloomberg and Business Standard reports, Swiggy prepare कर रहा है 10,000 crores का fund raise, which is about 1.1 billion dollars from institutional investors. और ये फंड रेज लाइव हो सकता है as early as next week, depending upon the market conditions. इस डील के साइज की बात करें तो it still might still change based on the investor appetite, and this comes just after Swiggy's IPO and signals कि company gear कर रही है for the next phase of expansion. स्विगी ने शॉर्टलिस्ट करे हैं 3 मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू मैनेज द शेयर सेल, विच इज सिटी ग्रुप इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया एंड कोटक महिंद्रा कैपिटल. और ये बैंक्स हैंडल करेंगे प्राइसिंग, मार्केटिंग, ब्रिंगिंग इन द लार्ज डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लोबल जायंट्स प्लस वन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बैंक शोज कि स्विगी को डीप डाइवर्सिफाइड पार्टिसिपेशन चाहिए. ऑल्सो कंपनी ने ऑफिशियली अभी इस पर कुछ भी कॉमेंट नहीं किया है, बट अगर हम रीजन देखें तो वो काफी ज्यादा क्लियर है. स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट. फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, तो फ्रेश कैपिटल स्विगी को हेल्प करेगा अपना कैश रनवे एक्सटेंड करने में एंड टू रिड्यूस द फाइनेंशियल प्रेशर. Now if we look at the another reason, तो it could be scaling high growth verticals like Instamart, because Instamart पे हमने देखा कि एक strong growth दिखी है, but it still requires heavy investment in warehousing, delivery network, dark stores and discounts. और ये कैपिटल यूज हो सकती है फॉर एक्सिलरेटिंग द ग्रोथ इन क्विक कॉमर्स. एंड थर्ड इज स्टेइंग कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट जोमैटो एंड ब्लिंकिट, बिकॉज जोमैटो भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है ब्लिंकिट में, एंड स्विगी नीड्स टू compete in the delivery plus the quick commerce ecosystem. Also, this capital can be helpful for the company in taking advantage of the strong equity market as well, because Indian markets trade कर रहे हैं अपने near highs पे and making a great window to raise funds before volatility increases. Also, अगर ये funds सही से deploy होते हैं तो this could be a turning point for Swiggy's growth story, especially as it balances between food delivery, quick commerce and new business lines. And now let's move to our third and last story for today, which is about Meesho. And its IPO is opening today, that is December 3rd, and the grey market premium has already jumped to 36 to 38%. So we'll see what's driving this huge excitement, and let's break down all the important details about the IPO. So Meesho का IPO currently open होगा for subscription today, that is December 3rd till December 5th, and the share allotment is expected by December 8th with listing on December 10th. Company raised करी around 5,400 crores with a price band of 105 to 111 per share, and upper band पे Meesho की valuation stand out करेगी at around somewhere 50,000 crores. Now platforms जो grey market activities को track करते हैं, they are showing a premium of around 40 rupees per share, that is around 36 to 38% listing gains. So clearly demand जो unofficial markets में है, that is really strong before the IPO opens. But GMP इतना ज़्यादा high क्यों है? So let's break down the reasons and the key factors behind this strong sentiment. तो सबसे पहले प्रमोटर्स का एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिल रहा है. ये सबसे ज्यादा बड़ा रीजन भी हो सकता है बिकॉज मीशो के प्रमोटर्स या फिर अर्ली इन्वेस्टर्स जो हैं, दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द ऑफर फॉर सेल साइज. एंड ये सिग्नल करता है दो चीजों पे, कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने शेयर्स अभी होल्ड करने हैं, या फिर प्रमोटर्स बिलीव करते हैं कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है. अभी ऑफर फॉर सेल है अराउंड 1171 करोड़ का, विद शेयर्स बीइंग सोल्ड बाय एलिवेशन कैपिटल, पीक एक्सवी, वेंचर हाईवे, वाई कॉम्बिटोर एंड प्रमोटर ग्रुप्स. मार्केट्स यूजुअली एक स्मॉलर ऑफर फॉर सेल को पॉजिटिव साइन की तरह लेते हैं, बिकॉज दिस रिड्यूसेस द सेलिंग प्रेशर एंड शोज इंटरनल कॉन्फिडेंस इन द कंपनी. Second reason can be that the company is betting big on technology. ये कोई typical e-commerce company नहीं है सिर्फ, rather it's also focusing on technology first advantage which reduces the need for manual operations. Company काफी ज़्यादा heavy use कर रहा है Gen AI tools का to improve the development speed. Also mobile app is designed specifically for the Indian user behavior and highly efficient low cost fulfillment model, जिससे कि company scale कर सकती है fast while keeping the operating cost under control. Third reason can be that Meesho has no direct listed peer. Now this is another reason कि analysts इतने ज़्यादा bullish हैं, because Meesho किसी भी category में neatly fit नहीं होता like Zomato, Nykaa और Mamaearth. इसके low average order value होते हैं, massive user scale है, asset light fulfillment है, also a unique NMV linked business model. So according to analysts कोई direct peers नहीं है Meesho के scale या model के, because investors compare नहीं कर सकते इसको directly किसी और platform के साथ, because बाकी सब platforms कहीं ना कहीं premium based sentiment पे खेलते हैं, and this is something different. Turning losses अभी देखें तो एक
around 3,900 crores का in FY25, but this was mainly due to exceptional item जैसे रिवर्स फ्लिप टैक्स या फिर रीस्ट्रक्चरिंग. अगर हम ऑनगोइंग बिजनेसेस में देखें तो लॉसेस कहीं ना कहीं फॉल ही हो रहे हैं, एंड दिस इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट फॉर द कंपनी. तो क्लियरली कंपनी मूव करिए टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, एंड मार्केट्स ऑलवेज रिवॉर्ड कंपनी दैट शोज ऑपरेटिंग डिसिप्लिन. एंड द लास्ट रीजन कैन बी द जीरो कमीशन मॉडल ऑफ द कंपनी, जो कि अट्रैक्ट करता है यूजर के पार्टिसिपेशन को. मीशो का जीरो कमीशन मॉडल एक काफी बड़ा डिफरेंशिएटर है. ये हेल्प करता है सेलर को टू रिड्यूस द फुलफिलमेंट कॉस्ट, व्हिच मींस दैट दे कैन ऑफर लो प्राइसेस एंड दिस अट्रैक्ट्स मोर बायर्स. CEO of the company says that they build everyday low prices, which has created a platform that appeals to new online shoppers, small sellers, tier 2, 3 and 4 city buyers and people who prefer affordable categories. तो ये मॉडल मीशो को एक ब्रॉड यूजर बेस के साथ साथ एक ऐसी चीज भी देता है which is very difficult to replicate, and the result is strong seller growth plus strong buyer growth, which leads to a strong investor sentiment. So that was all for today's edition of Daily Market Rundown. इस वीडियो में हमने कवर की 3 न्यूज. फर्स्ट वन वाज बेस्ड ऑन रुपी फॉल, जिसने हाईलाइट किया कि कैसे ग्लोबल सर्टेनिटीज और वीक डॉलर फ्लोज की वजह से जीडीपी ग्रोथ भी ओवरशैडो हो गई. देन अ फंड रेज ऑफ अराउंड 10,000 करोड़ बाय स्विगी, एंड मीशो का स्ट्रॉन्ग जीएमपी एंड रीजंस कि क्यों उसका जीएमपी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. Also, we are really curious to know that which of these stories or trends do you think will matter the most going forward. So drop your thoughts in the comment below, and do not forget to like, share and subscribe our channel.